Hey guys, welcome back to Crypto TV. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy and I welcome you all to this channel. Now today we will be looking at the technical analysis outlook for the two major cryptocurrencies which are Bitcoin and Ethereum. And we'll be talking about few technical indicators and we will actually try to understand what the charts are telling us technically. So चलिए start करते हैं वीडियो को और पहला जो हमारा करेंसी है which is Bitcoin. तो बिटकॉइन का जो करंट मार्केट प्राइस है अभी वो है 30,500 का. अगेन एंड अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. आई थिंक इट्स बीन नाउ one month or so that the price of Bitcoin is trading in a very small range. And what is that range? Support is at 29,000 level and resistance is at 32,330 levels. And even most of the time in that area also the price is not able to test this 32,330 level. So mostly it's trading in a range of 29,000 or 31,000 levels, and that's something you can see it. अगर आप अभी का करंट मार्केट प्राइस भी देखते हैं तो प्राइस वही 30,500 के आसपास ही मूव कर रहा है. ओवरऑल अगर मैं पूरे ट्रेंड की बात करूं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करूं, तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा एक बेरिश ट्रेंड मिल रहा है. और अगर मैं उसके बीच में एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करूं तो मुझे एक कंसोलिडेशन ट्रेंड मिल रहा है. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग व्हेन वील मूव ऑन टू द चार्ट. Also, if you look at the RSI here, so RSI is at 47 and moving averages levels are 50 EMA is at 32,955, 100 EMA is at 36,207 and 200 EMA is at 39,785. No change in the support and resistance levels, so these are completely same. Support 1 is at 29,000. Support 2 is at 25,823, resistance 1 is at 32,330 and resistance 2 is at 35,335. Let's quickly move on to the Bitcoin chart. All right, so this was the the complete trend that we can talk about the long term trend, and this is the small consolidation area which we can see. I think it's been around 1 month or so. It was started somewhere around in the mid of the May, and yes, so somewhere around from 10th or 11th of May it started, and from that time till now, till today, the price is trading in this particular small range only. Now 2-3 things looks good here. One, if you look at the yesterday's momentum, you can just look at this candle. This is basically candle which shows a kind of bullish bullishness. Why? You will see that this is a red candle, but you will see a bullish candle. Why? Because all the fall that was there yesterday, it was just vanished because of the entry of the buyers. तो बायर्स के आ जाने से, बायर्स के बाइंग करने की वजह से कल जितना भी एक ये रेड कैंडल होगा, फॉल होगा, वो कंप्लीटली यहाँ से हमें वैनिश्ड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमको खाली एक फ्लैट मोमेंटम या एक डोजी काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिला है. आज की भी अगर मैं बात करती हूँ तो आज अभी प्राइस अराउंड 3% डाउन है, बट अगेन वॉल्यूम्स बहुत कम है और जो मेन सेशन है, मेन इवनिंग सेशन है, वहां से हमको देखना है कि क्या मूवमेंट रहता है. तो मुझे नहीं लगता कि जब तक प्राइस इन दो एरियाज को ब्रेक करता है, या तो सपोर्ट को ब्रेक करे या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, जब तक प्राइस ब्रेक नहीं करता है, जब तक प्राइस इसी रेंज में मूव करता रहेगा. सो मे बी यू विल सी one day green candle, another day you will see a red candle, and this kind of formation or this kind of movement will happen till the time the price will not break either of the side. Now this is something you can look at the Bitcoin, and similarly on the same lines we can have Ethereum. So Ethereum में भी हमको सेम ही सिचुएशन मिल रहा है. यहाँ पे प्राइस जो है वो 1800 लेवल पर है. बहुत ही स्मॉल रेंज है यहाँ पर भी, 1800 टू 2000 लेवल्स के अराउंड. और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट 1 है 1724 पर, सपोर्ट 2 है 1510 पर, रेजिस्टेंस 1 है 2145 पर और रेजिस्टेंस 2 है 2336 पर. Overall trend still a bearish trend, negative trend. RSI is at 40, and if you look at the moving averages, so 50 EMA is at 2205, 100 EMA is at 2516 and 200 EMA is at 2793. Let's quickly see the chart of Ethereum. All right, so if you look at here, you can see, and you can get a little difference from the Bitcoin chart. I'll tell you what is that.
So this is the overall downtrend, and if you if you remember the Bitcoin's chart, you can see a clear consolidation एरिया राइट. सो वहां पे जो हमारा एक पिछले एक महीने से मूवमेंट है वो एक बहुत ही फ्लैट काइंड ऑफ मोमेंटम चल रहा है. यहाँ पर भी अगर मैं इथीरियम की भी बात करती हूँ तो ट्रेडिंग जो हो रहा है वो रेंज में ही हो रहा है. बट एक डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि प्राइस जो है इथीरियम के केस में एवरी टाइम इट्स मेकिंग लोअर लोज, सॉरी लोअर हाइज. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ये हाइज क्रिएट कर रहा है वो लोअर कर रहा है. Also, if you look at here, the support level is same, which is at 1725. तो सिंपल मुझे यहाँ पे इस सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्राइस अगर देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि प्राइस जो है वो सपोर्ट एरिया को हो सकता है कि ब्रेक कर जाए. तो जब वो ब्रेक करेगा तब दैट विल बी द डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज एज ऑफ नाउ यू कैन सी कि प्राइस जो है वो इसको सपोर्ट लेके और थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम दे रहा है. तो जब ये जोन जो है कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा, डेफिनेटली वी विल सी अ breakout from there, or breakout at that level. Now that is something which is also looking at lot of other things, like if you look at the overall economies or world economies, so you can see that there is a liquidity crunch and everything like that. That could be one of the reason people or the investors are staying away as of now from the crypto market. So this is something you can technically, this is something you can just look at the levels and look at the technical indicators, and you would be able to get more clarity. So this is how we basically conduct the sessions every day. I hope you are learning something new, and hope you enjoyed this session. So thank you so much for joining us.